Hello and welcome to this new episode of Frankly Speaking. And joining me tonight on Frankly Speaking is none other than an actor par excellence, Manoj Bajpayee. And with him is Suparn Verma, creative director of the film सिर्फ एक बंदा काफी है। मनोज बाजपेयी जी, सिर्फ एक बंदा काफी है, एक हीरो के लिए तो ये एक ड्रीम टाइटल होगा, सिर्फ एक बंदा काफी है, सब पर भारी है। Does it give you that kind of a feel? No, it doesn't give me any kind of film. It's just that this title is is very much in sync with the subject, where we are talking about a lawyer who, without him knowing about it, without him really wanting it, suddenly a case of a minor comes in his lap and he doesn't know how to respond to it. He finds a courage from the girl to go ahead, initially reluctantly, and then he keeps on going relentlessly to get justice to her. So it always takes that one person, to believe in the cause, and then after that, things start happening for him, where people start coming after him. People start coming from all corners to support him. So it's always about that one person taking that one step. तो ये एक कहानी है एक वकील की, Right. एक नॉन डिस्क्रिप्ट छोटी जगह में रहने वाला वकील, शायद इतना स्पॉटलाइट उस पर कभी भी नहीं हुआ होगा, और ये आधारित है एक ट्रू स्टोरी पर। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स जब किसी फिल्म के साथ लग जाता है तो इसमें कोई ना कोई लीगल केस होना आपको लगता है आजकल के ज़माने में ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, मुझे लगता नहीं। नोटिस वगैरह कुछ मैंने सुना कि हमारे प्रोडक्शन के साइड को आए हुए हैं, और आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि जो हमारे ट्रू इंसिडेंट्स हैं, यस, और बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो कोर्ट के रिकॉर्ड बुक में है और पब्लिक डोमेन में है। और जब आपका इंटेंशन सही चीज़ पे है, हमारा इंटेंशन है वो लड़की, हमारा फोकस है वो लड़की जो 15-16 साल की पीड़िता जो है, जिसकी कहानी है और जो अपनी कहानी में जस्टिस मांग रही है। इन ऑल ऑफ द इयर्स the lawyer got his strength and courage from this girl, because that little girl never changed her statement, never. So this is also an issue of child safety, child security in our society, where most of the people, most of the predators, in most of the times, most of the cases, are the people who are very close to the family. Okay. हाँ, ये हमेशा देखा जाता है. And even in this case, the family trusted their little girl, with this man. Okay. And this is where the danger lies. This is the cause. This is the issue. I don't think anything or any other character is bigger than this issue that we have been facing in our society. This is the time that we as parents should be very, very aware, where in terms of monitoring the child's activity, in terms of trusting our little children even with our family members, which is something that has attracted me towards this script. Because my initial years when I was doing theatre, I used to do workshops with slum children, and the kind of stories that I used to hear from the girls, they used to make me go numb completely, and I used to have sleepless nights. And somewhere I was looking for someone to tell that story so that I could be part of it. And when this story came to me, I said, okay, let's go ahead and make it sure that we have a great script before we start allocating the dates or going for shooting. Yes, our director, Apurva Singh Karki, and our creative producer, Suparn, and the writer, all of them made sure that, unless the script is foolproof, we are not going to shoot, because this is a very, very fragile issue, and this is a very important issue of POCSO. And POCSO के बारे में हर किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था जब हम कि भाई POCSO एक्ट क्या है, POCSO एक्ट आया कब,
और पॉक्सो एक्ट के किन किन चीज़ों के बारे में है, बच्चों की सुरक्षा के बारे में है, तो क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, और उससे हम भी एजुकेट हुए. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम फाइनली पार्ट ऑफ अ फिल्म which is talking about a very very grave issue of which is और prevalent in our शायद society. इन द फैमिली सिस्टम, फैमिलीज के अंदर शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है. नहीं हम इतने ट्रस्टिंग होते हैं कि अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों को, अपनी बेटियों को किन से बचाना है बिल्कुल. और किन की नजर बुरी हो सकती है. बिल्कुल. पर इस केस में तो गॉडमैन है जी. और गॉडमैन की कहानी इस देश में तो कम से कम बहुत मुश्किल है करनी. देखिए, इसका मतलब ये है, मैं एक केस पढ़ रहा था नविका, जिसमें कि एक टीचर ने 6 साल की बच्ची का रेप किया. नाउ हु आर रिस्पॉन्सिबल? यस, द टीचर इज द प्रेडेटर. यस, दैट मैन शुड बी गिवन द हार्शेस्ट पनिशमेंट. ओके, बट हु ट्रस्टेड their child with that teacher so blindly? So everyone is responsible. So here in this case, the family, the parents have believed blindly, which is completely right. Okay, even I have a spiritual guru. Okay, so we have to be aware enough, cautious enough to trust our vulnerable children with anybody else. But in this case, you are talking about the spiritual guru, or the case that I'm talking about, the teacher, or I would go to an extent that I can't. I wouldn't want my brothers to trust me with their little daughters. You know, even in our family, we have to monitor the activities of the girl child, especially. Not that the boy child is safe enough in this society. But we have to be cautious. We have to be. And if they are trusting you, with their child, then it becomes your responsibility as a teacher or as a guru not to break that trust. लेकिन ये होता आया है, हो रहा है, हर जगह हो रहा है. लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि जब ऐसा होता है तो ये आसान केस नहीं होता. नहीं, अगर आप लॉयर के नज़रिए से देखें या उस लड़की के, उसके परिवार के नज़रिए से देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी, खास करके मैं अपने देश की बात कर सकती हूँ, यहाँ ब्लाइंड फेथ बहुत होता है जी. और ब्लाइंड फेथ के साथ आ जाता है पॉलिटिक्स. जी. क्योंकि राजनीति, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी वहाँ पली बड़ी हूँ, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे देश में मान्यता बहुत होती है और कोई मानने को तैयार नहीं होता कि कोई बाबा या कोई गुरु कुछ गलत कर सकता है. और इनको संरक्षण बहुत होता है सिस्टम का, क्योंकि इनके फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स हमेशा वोट बैंक होते हैं. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये एक रिस्की टेरिटरी है एक फिल्म बनाने के तौर पर? देखिए, रिस्की टेरिटरी तब हो जब मेरा कोई पर्सनल एजेंडा हो उसके साथ में. यहाँ पे मेरे लिए पर्सनल इशू है, मेरा जज्बात है, जो मैं एक 23-24 साल के उम्र में जब मैं अपनी आँखों से देखता था, बच्चों को सुनता था. आपको बताऊँ, एक छोटा बच्चा था, वो पूरे दिन रोता था. And still I'm feeling vulnerable talking about him. उसको सिफिलिस हो गया था उसके एनस में. He was abused that much. Don't you think that this is a far bigger an issue than anybody getting offended? So for me, this is a very personal story, and I wanted to be part of this story so that I can contribute in creating that awareness. In this case, you are saying that there may be controversy. Yes, our production side has gotten some notice also. Yes, that started. But I would again through your show, I would request people to watch the show, watch the film, and decide what is right and what is wrong. And nothing is fictionalized here. This is not figment of imagination. Public domain. This is in public domain. बिल्कुल. As a creative producer, why Manoj Bajpayee? If not him, who else? I mean, the thing is this, that he is one of the finest actors we have in our country today. I've been privileged to work with him earlier as well in Family Man 2 or Acid Factory. This is the third association together.
And we needed an actor of conviction, of truth, his inner truth shining through his eyes, and an actor who could convey so much, whether in silences, whether in the most dramatic moments possible, and whose faith shined through. Because one of the biggest things about this film is about faith. We all are believers. Lack of belief is belief in itself, as is belief in whoever you believe in. When we give a human being, make him almost close to the supreme being and give him that much faith. And we come from a country which is highly spiritual. We've had some great Gyanis and Gurus over centuries. A few rotten apples honestly don't spoil the whole ecosystem. But when these people, they mess up with the faith of millions of followers who are coming out of love, who are coming out of devotion, it's a big issue, right? We need an actor of that caliber to kind of show this journey of 5 years. And I think the only name that we could come up with was him. And he's the first one he went to in 15 minutes of the idea. He said yes. Now we listen to the script. So yeah. 15 minutes is all it took. Yes. And then after they have given me the freedom to choose my own director and the writers team. And this is where Apurva Singh's name, kind of surfaced. Because his mini series called Aspirant, which was made by TVF, yeah. And I happened to watch that series and I said, wow, who is this new director? Somewhere I felt that that young man will do justice to this kind of a story. Because, the old hands, I felt that, they will treat it in a way which is the format that we've already seen. A new mind, a new young blood will have his own take, which will be quite exciting and interesting and real. And yes, today I'm very, very proud to say that I'm part of Banda, and Banda is a very important film in my filmography. Manoj Bajpayee, you've always said that you don't go by a formula of a commercial film. For you, the story is important. But for an actor, when the story is as potent as this, right, and you, even your producer says that it should shine through your eyes. तो आप महसूस जब तक नहीं करेंगे, आप वो सच्चाई अपनी आंखों में ला नहीं सकते. एक्टर पे ये कितना टोल लेता है सेल्फ पे? एक्टर पे तो टोल लेता है, बिकॉज आप किसी भी किरदार को अगर आप उतने डूब के करते हैं, तो मैं अपने बारे में कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आई डोंट कैरी माई रोल्स टू माई होम. आई से आई एम सरप्राइज्ड that if you are really immersing that deep, it can't happen that you just shrug it off on the set and you say, now I'm home and I'm watching. I'm just playing Ludo. Yeah, I'm playing Ludo. It's very difficult. Ask my wife. She kind of she keeps giving up on me. कि यार ये आदमी जो है, ये कितनी बार तो वो कहती है कि यार तुम कभी-कभी तुम अपने आप से बात करते हो. जब मैं गली गुलियाँ की प्रिपरेशन करता था, she started saying, please take care of yourself, you're taking it too far. And then I realized that yes, I was talking to myself, but this is what was the role, And somewhere I was there before I went on the set. With this one, I wanted that freedom of staying away from my family, even though we were shooting in Bombay, few of the parts. And I stayed in town. और एक होटल में इन्होंने रखा था मुझे, और मैं किसी से नहीं मिलता था. शूटिंग करने जाता था, वापस आता था, कमरे में अगले दिन की रिहर्सल करता था, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करता था ताकि मुझे सुबह याद रहें, और मैं सोने चला जाता था. फिर so that I'm completely cut off from my family. And you're living this life. And I'm living this life of this lawyer. PC Solanki. PC Solanki, yeah. So yeah, I do those mad things to achieve everything about the character that I'm playing, but I love it. पर कितने समय तक आदमी ये कर सकता है? How long can you stay away from family? मतलब my family has already given up on me, so I have that luxury. But we shot fast. I think 3 months. I think is when he was locked in. Yeah, so but when we are shooting, that is the time I prefer to stay away, even if I'm shooting in Bombay. And also, Navika, I mean, Bombay. If I'm packing up at say 7 o'clock, then travel will kill you. Yeah, traveling will kill me. I'll reach home by 9:30. By that time, my little one is actually getting ready for bed,
and that will be a disturbance. She'll get excited thinking that her dad has come, and then she will not sleep. It will completely disrupt their discipline. So it's better that I stay away. That will do good to the performance that I'm doing, and that will do a lot of good to my family's discipline. But Manoj Bajpayee, I mean, apart from showing the dedication that you do, आपने कहा ये बहुत फ्रेजाइल स्टोरी है. जी. फ्रेजाइल तो रिश्ते भी होते हैं. जी. फैमिली मैन है आप. यू आर द क्विंटेसेंशियल फैमिली मैन. फैमिली कैसे अडेप्ट करती है टू लेट यू गो टू बी इन योर क्रिएटिव स्पेस, टू इमर्स योरसेल्फ? First and foremost, my wife has been an actress, so she understands the discipline of it. I have been quite blessed that way, that I have a fantastic life partner who is very, very understanding about it, and she also knows that eventually I'm known for my performances, not for my good looks, not for my dancing or not for my action. So I have to be really good in what I do, and lot of respect she has for me. I have lot of respect, and I feel indebted that she's been so understanding, so giving when it comes to the job that I do. That's how family works. Family works for because of the respect, mutual respect and admiration. पर हमेशा तो अंडरस्टैंडिंग पे भी नहीं जो झगड़े की बात करेंगे तो हम सब झगड़ा करते हैं, झगड़े तो होते रहते हैं. उतने तो झगड़े मेरे माँ बाप में तो बढ़ते दम तक रहे. तो उसके वो तो छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो तो चलते रहेंगे. जब एक ही छत के नीचे आप रहेंगे तो बर्तन तो बजेंगे. हाँ, बजेंगे. नहीं, पर बेटी भी आपकी, हाँ, कहीं ना कहीं इंसान खुद भी लोनली होता है, बच्चे भी लोनली होते हैं, बट दे अंडरस्टैंड एंड शी अडैप्ट्स टू योर रूटीन. मेरी बेटी को अभी वो मुंबई से के बाहर एक घंटे दूर वहाँ पे एक बहुत अच्छा बोर्डिंग है, वहाँ डाला है उसकी. और राइट नाउ शी इज़ एंजॉइंग इट क्वाइट अ लॉट. वीकेंड पे आ जाती है वो और फिर चली जाती है. बट मुंबई शहर में हमने उसको बोर्डिंग में इसलिए भी डाला क्योंकि अगर टेनिस सिखाना हो तो आप दूर जाइए, फिर अगर किसी अच्छे से पार्क में लेके जाना है तो बहुत दूर जाइए. बिल्डिंग के पार्क में उसने खेलना बंद कर दिया क्योंकि बिल्डिंग के पार्क में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं. शी स्टॉप्ड मिंगलिंग विद देम. एंड अगर घर पे रहते हैं तो स्कूल से आते हैं फिर वही डिजिटल कंजम्पशन. सो हॉस्टल में डाला है और मैं हमेशा चाहता था, हम दोनों ही चाहते थे कि हॉस्टल में रहे. एंड नाउ शी इज़ रियली टेकन इट अप सो वेल. So that's also happening. But coming back to Banda, राइट. न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी जी. अप्रिसिएशन मिली है. जी. पीपल हैव सेड गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म. राइट. जब यहाँ रिलीज होती है तो कुछ अलग सी टेंशन होती है. हाँ, क्योंकि यहाँ की फिल्म है और ये हमारा गढ़ है, वर्किंग प्लेस है. तो हम जानना चाहते हैं कि 1 tier, 2 tier, 3 tier की ऑडियंस किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है. यहाँ की ऑडियंस ने हमें वो मुकाम दिया है, वो प्यार दिया है, वो इज़्ज़त दी है. तो जाहिर सी बात है, घर की बात अलग होती है. कभी कभी तो मैं बहुत सारी फिल्में इसलिए करता हूँ नविका क्योंकि ये मेरे गांव के लोगों को बहुत पसंद आएगी. जिस गांव को बैक होम We all grow जैसे up गली with गुलियां भोसले मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन एक बागी 2 और सत्यमेव जयते मैं अपने गांव के लोगों के लिए करता हूँ ताकि उनको जो है गर्व हो और मेरे डायलॉग पे ताली हो जाए. वहाँ तो सीटी भी बहुत बजाते हैं सामने वाली रो में बैठ के. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ पे कॉइन्स उड़ते हैं. हाँ, बिल्कुल. पहले चवनिया डाला करते थे, आजकल तो शायद उतने छोटे वो मिलते नहीं. आजकल 5 और 10 रुपए, 20 रुपए महंगा हो गया है. महंगा हो गया. आजकल नोट उछालते हैं, सिक्के लगेंगे. Well said. Everybody wants the appreciation back home. Right. But क्या एक्टर्स में थोड़ा सा competitiveness नहीं होता? थोड़ा सा नहीं, हमारे जिस तरह की कटथ्रोट इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है. मैंने अपने आप को उससे दूर रखा. आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टे ऑन द फ्रिंज because I realized that is not the path that I want to take. The commercial films, the stardom, that kind of a positioning. I was looking for a different path, and this is where I realized that it's not better for me
to get into that kind of what you call rat race. Rather, I stay outside and do the kind of films that I always wanted to do, and choose the directors that I always wanted to work with. You know, old, not so old, and new guys. I have worked with many new directors. You know, Supan can really tell you on that one. Also because these were the scripts, and these were the directors could take me in the direction that I wanted to go, and they could help me in. But it's a gamble. But it paid off. हाँ, पर He's जब आप also going gamble for the करते हैं तो आप passion, I think, Yeah. right? Because when you are hungry, Yeah. you're passionate. Right. And he always seeks hungry people because they will give their everything. You know yes, you are right that it is a gamble. When I was in a village, it was a gamble to travel to Delhi to do theatre. And that was not a recognized profession, or rather it was, you know, something that people look down upon. Okay? Village. Yeah, Belwa. Belwa. Yeah, so that is very near Nepal border. The district is West Champaran. Near. So I've never told anyone, never shared this dream of mine, with the fear that, you know, they will never let me get out of here. I came here, when I was doing theatre, I was doing quite well. Then it was a complete gamble to leave this and go to Bombay. And then there was no role for me. I mean, even after Satya, there were no roles that I wanted to do. Satya was a cult film. It was a cult film. Then came Shul, then Kon. You know, one after another, I was there. But they were not writing films, the kind of films that I wanted to do. There were not, you know, enough roles for me, which I really wanted to do. Then again, I took a gamble. I used to wait for 8 months, 10 months, 11 months for that one role to come by. But today, because of the OTT, things have changed drastically. The whole game has changed. Yeah. Now the choices are way too many. There are very good scripts being offered. Now the challenge is to choose the best out of it. Choose the right one. The one that will, you know, separate my work from the rest, that is the challenge, or separate it from the clutter which is there on OTT. But it's an interesting, exciting gamble that one takes, and I'm so happy that, you know, Gangs of Wasipur, Family Man. I mean, each one of them Yeah. is so distinct from the other. Right. और Gangs of Wasipur देखकर तो जो बिहार में रहे हैं उन्हें भी एक तरह से आंख खोल कर देखने कि हम यहाँ रहते थे। मैं भी सिंदरी में पली बड़ी तो हूँ, आप तो जानती हैं बहुत सिंदरी की हैं आप तो। हाँ, अब झारखंड हो गया, पर अर्स्टवाइल बिहार था। बिल्कुल। लेकिन हमने वहाँ सब, और वहाँ तो कोल माफिया के बीच बस में, ये तो बिल्कुल कोल माफिया तो और उसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखकर ऐसा लगा कि बॉस यहीं से आए हैं। बट प्रेशर तो होता है ना कि हाउ डू पीपल मेजर सक्सेस? एक तो सेटिस्फैक्शन, पर सेटिस्फैक्शन क्वांटिफाइबल नहीं होती। आज आप सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपकी फिल्म, आप काम करके आए हैं, अच्छा लगा, लेकिन एक शॉर्ट रन होता है 6 महीने, साल में, वो आप कैसे क्वांटिफाई करते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसका रिटर्न है कि नहीं? रिटर्न अगर मॉनेटरीली अगर आप उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे ना, तो देयर इज नो एंड टू इट, एंड एवरी टाइम आई गेट इनटू दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आई गो बैक टू माय ड्राइंग बोर्ड. माय ड्राइंग बोर्ड इज नथिंग बट गोइंग बैक टू द रीजन for which I started this journey, okay? And I always went back. I always keep. So my parents, you know, passed away in these 1.5 years. I lost both of them, and I could never be with them because of my journey as an actor. And every time I kept on telling myself, remember why you missed out on all those years with your parents. I could not see them getting old. The saddest part of my journey is I could not be with them, could not see those wrinkles, you know, developing, okay, on their वो उठने बैठने की दिक्कत, वो चलने की तो जब मैंने वो देखने की कोशिश की वापस जा करके, तो मेरा रीज़न मेरे लिए बड़ा स्ट्रांग होता गया.
पर्पस बहुत स्ट्रांग होता गया कि बिकॉज ऑफ माई पैशन टू बी एन एक्टर, आई लेफ्ट दैट very important aspect of my life. So I should be just doing that all the time. Rest, you have to keep embracing it, the love. पर ये आसान होता है, आप कर लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा प्रेशर्स रहते हैं। मेरे पर नहीं रहते, कसम नहीं से रहते? नहीं, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। आप मुझे बोलोगे ये कप नहीं उठाना, मैं इसी को उठाता रहूँगा बार बार। तो मुझे लोग जब जब डराते रहे या मुझे डर लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, शायद मैं इसमें सफल नहीं होऊंगा, तब तब मैं अपने डर को तोड़ करके वापस जा करके डर के आगे जीत। हाँ, मैं करता रहता हूँ। I want to ask you the question is OTT film, is film riskier, OTT बेहतर है, how do you decide where do you want to put it? So it's not risk that's the defining thing, because both are risky, both can work, you can go wrong either place. Story needs legs. Some stories are films, they can only be done as a 3-act structure, start, middle and end, but in a certain format. इतनी ही कहानी है. There are some stories which are like novels, which have इस कैरेक्टर की कहानी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, और उसका आर्क ये है. उसके लिए आप सीजन्स चाहिए, उसके लिए आपको एपिसोड्स चाहिए जहां आप उसको बॉडी देना चाहते हैं. सो अ फिल्म इज इन अ वे ऑलमोस्ट लाइक अ शॉट ऑफ, इट्स लाइक अ रेड बुल शॉट, एंड अ फिल्म इज लिटरली लाइक अ शो इज लिटरली लाइक अ राजधानी की थाली, जहां सब कुछ है, कटोरियां हर एक का महत्व है. सो बेसिकली कहानी डिसाइड करती है कि आप क्या बनाएं, नॉट द रिस्क फैक्टर, बिकॉज दोनों में रिस्क है. बट या ये कहूंगा कि स्ट्रीमिंग में प्रोड्यूसर इज सेफर, बिकॉज आप फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस पे आपका कलेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. आप एक एक्स अमाउंट के लिए फिर शो बना रहे हैं जिसमें आपको इतना मिलने वाला है, वो प्री डिसाइड है, ना बाद का ना पहले का, इतना है. अब इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट खराब करें, you will make losses. Right. That is a different story. But today we live in a world where we have bound scripts, we have prep of months, we shoot like an army, we do post like an army. So वो नहीं होता. It's very precise cut work. Films are riskier in terms of reward, but the reward for films is much more. The risk ratio reward is different. लॉटरी भी लग सकती है, बिल्कुल, और डूब भी सकते हैं. और बॉलीवुड आजकल ज्यादा डूबता हुआ नजर आता है, एक्सेप्ट अ फ्यू फिल्म्स. आपको लगता है फॉर्मेट फॉर्मूला जेडेड हो गया है, ओटीटी के साथ कंपैरिजन है जो ज़्यादा लाइव वायर है, लॉन्गर प्लॉट्स हैं, घर में बैठ के देख लो, क्या व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कंपटीशन, आर दे कंपीटिंग विद ईच अदर? I'll let him respond to. मेरे लिए पर्सनली आई थिंक मंथन होता है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है. ये एक पीरियड ऑफ चेंज है जहाँ हमारी बहुत सारे सेट पैटर्न्स थे. एज अ व्यूअर आपका देखने के ऑडियंसेस से, सिनेमा इज कम्युनिटी व्यूइंग, 100 लोग जाते हैं, साथ में देखते हैं. टीवी वॉज फैमिली व्यूइंग, 4-5-6 लोग सदस्य एक टीवी पे बैठते हैं. अब प्लेटफॉर्म जो स्ट्रीमिंग जो डिवाइसेस हैं वो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, आईपैड पे देख रहे हैं, या टीवी पे देख रहे हैं, और आप शायद नेटफ्लिक्स देखें, आप हॉटस्टार देखें, आप अमेजॉन देखें या जी देखें, राइट. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं. व्यूइंग हैबिट्स बदल गई हैं, लोगों का एक्सपोजर बदल गया है. और ये जो कोविड के 2 साल थे जहाँ बहुत लोग घर में थे, they have been exposed to the best of the world. Right. They have also been exposed in a way. The good part that has happened is अब हमारा जो फिल्में हैं, they are no longer की हिंदी फिल्में. आज तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, Right. तेलुगु, मराठी, बंगाली, हर तरह की फिल्में हैं, बिकॉज आप उन्हें डब कर रहे हैं या सबटाइटल्स देख रहे हैं, तो आपकी एक्सपोजर बढ़ गया. अब आपको उनकी रीमेक नहीं देखनी है, बिकॉज आप ओरिजिनल देखे बैठे, यूट्यूब पे देख लिया आपने, घर में बैठे देख ली. अब एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड कि ऑडियंस बदल के एम्पावर हो गई है, एंड दे हैव मैच्योर्ड. सो नाउ यू टू गिव देम दैट. तो ये वो चेंज का पीरियड है, और चेंज इज लाइक बर्थिंग, राइट. इट्स पेनफुल, राइट. सो ये वो पेनफुल पीरियड है जहाँ कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट स्लोली इट विल ऑल कम टुगेदर, एंड एक सर्कल ऑफ लाइफ है. आज नीचे तो कल ऊपर जाएगा. लेकिन एक एक्टर के लिए मनोज जी, हाउ डू यू सी इट? यू नो, जब आप आए होंगे चंपारण से यहाँ, तो आपने सोचा होगा कि बड़ा स्क्रीन, क्या बात है. Does that also influence your decision? Because ultimately your devices
it's nice, but for an actor to see yourself on big screen, is it a different high, or you evaluate the craft more than the size of the screen? Definitely, after doing theatre and learning the craft, you know, over the years I've been learning the craft. So my passion for the craft is immense. Definitely, that is there. But you know, for community viewing, you know, going to a theatre for people to watch me on the big screen, I always wanted that. I have been part of, you know, many films till the pandemic, you know, knocked on our door. But now, I have, when there is another medium, I have to make the most of it. And most of the great stories are being told on OTT. So, and also I leave the decision of going to the theatre or on OTT completely on the producers, because it is their money. And I don't have any say in that. Banda, we thought that we'll go to the theatre, but somewhere the studio, Z Studio and, you know, our Vinod Bhanushali ji and their production, they just put the data in front of me about the footfalls. And they said that, you know, we want this film to go to each and everyone because this is a very important film. Correct. But the moment you go to theatre and footfall is less, people are going to view this or you know, pull it down as a flop film. You definitely don't want to do that to your film, because this film is an important film. It's just not another story. Yeah. You know, so that is where they have taken a decision that they will go on OTT and, you know, create awareness about the film massively, so that you know, people on the first day itself, they watch it and they become the mentor of the film. That is very, very important. I think the decision was very right. Initially, I was not that much convinced, but now when I see that the response that I have seen in New York, the response I'm seeing on you people's faces, the trailer is powerful. Yeah, the trailer you are saying. It's like it socks you. Yeah. So between the eyes. Yeah. So you know, that means the studio has taken the right decision about this film being, you know, showcased on Z5. लेकिन मैं एक और मुद्दे पे आती हूँ, और वो मुद्दा है जब किसी फिल्म के आगे लिखा जाता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स. हाल ही में एक और फिल्म आई है. अब क्रिएटिव फ्रीडम इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि केरला स्टोरी वाज बैंड इन वेस्ट बंगाल. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए एंड इट शुड बी स्क्रीन. डू यू थिंक these issues on that, or the controversies, or the breach on freedom of expression and creative freedoms that are coming, which are politically motivated, really are a challenge for people like you? I mean, look, I'm against boycott and I'm against banning any film. Let it all, you know, this is a democratic country. Whoever has whatever perspective, let them write their own story and put it out there for the people to decide. Okay, even if some film is a great success, for me I may not like the film. You know, some people may find a film very bad, but you know, the majority of the people have loved it. So let it be people's choice, rather than, you know, a state choice. I'm also very much against censoring it very badly. You know, let it be the decision of the parents. They are the biggest censor in a family. Okay, but even in my family, whatever my child is watching is being monitored. You know, monitored by us, by the parents in their household. I think it's very, very important that we go in the way US has gone, you know, when it comes to giving certificate. It is very important. लेकिन हमारे यहाँ तो सोसाइटी है ना. हाँ, तो हम यूएस नहीं है. नहीं, यूएस हमारी नहीं है. भारतीयता चली जाएगी. लेकिन यूएस भले ही नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम दो अलग कंट्री हैं, लेकिन हमने अपने कानून जो बनाते हैं तो हम कहीं से आइडिया तो आता है ना, कहीं से तो आइडिया लेते हैं हम, और फिर हम अडेप्ट करते हैं अपने सिचुएशन में. तो उसी तरीके से हमको ये देखना है कि हम लोगों
के बोलने पे, लोगों के अपने आप को एक्सप्रेस करने पे हम ना बॉयकॉट करें, ना बैन करें, ना उसको मतलब ब्रूटली सेंसर करें। लाइक वेदर केरला फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स, केरला पेपर्स हो या कश्मीर फाइल्स हो या पठान हो, जो भी है, आई मीन दीज आर फिल्म्स, एक एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, एंड इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि आप लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से हैं। आप एक कहानी बता रहे हैं, आपको पसंद आएगी आप देखो, आपको नहीं पसंद है आप मत देखो, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। उल्टा बॉयकॉट बैन से क्या होता है कि फिल्म ज्यादा कमा लेती है। फायदा ही होता लेकिन है। तो लेकिन कोई एजेंडा नजर आता है आपको कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, बैन कर दो, ये कर दो, मतलब यहाँ तक के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर डिबेट हो गई इस फिल्म पे कि एक विंग है जो इसको प्रमोट कर रहा है, दूसरा कह रहा है डाउन। केरला स्टोरी पर सेम सिचुएशन, मतलब तमाम कोर्ट्स में गई है, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स ने उस पे व्यू ले लिया। मनोज की तो पहली फिल्म बैंडिट क्वीन बैन हुई थी, तो मतलब उसमें ही इज यूज्ड टू मतलब इट वाज ऑस्कर ने कहा कि हम इसको ले रहे हैं प्रोवाइडेड ये चीजें सारी क्लियर करा के लेके आइए। तो हमारे ऑस्कर में रिप्रेजेंटेशन रुक गया था बैंडिट क्वीन। तो हमारे देश में तो मतलब कब से प्रथा है, मतलब लोगों को फिल्मों में लेके, फायर नाम की फिल्म आपको याद होगी, उस पे आग जली थी, उस पे कितना हंगामा हुआ था। तो ये नया थोड़ी है, तो पुराना है। अलीगढ़ हमारी फिल्म, उसको तो उसका तो ट्रेलर भी उन्होंने रोक दिया, तो हम तो ट्रेलर भी नहीं दिखा पाए उसका। तो हम प्लाकार्ड लेके खड़े होते थे जुहू सर्कल पे कि हमारी फिल्म अलीगढ़ 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 अलीगढ़, सब जगह चिल्लाते रहते थे। तो ये सब चीज़ें तो देखते हैं हम, लेकिन जहाँ तक बात है कि बॉयकॉट बैन, ये सेंसर वगैरह, मुझे बात ही जमती नहीं है। मैं अग्री नहीं करता हूँ, डेफिनेटली अग्री नहीं करता हूँ बहुत सारी फिल्म से जिनको बैन किया जाता है ना। लोगों को पसंद आएगी, लेकिन लोगों को पसंद आएगी तो देखेंगे, नहीं पसंद आएगी तो नहीं देखेंगे। हम हर किसी के लिए नहीं डिसाइड कर सकती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। भले ही हमसे अलहदा सोचता हो कोई आदमी, करने दीजिए, दिखाने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन मनोज बाजपेयी, आपको अपनी फिल्म करियर में, आपने बहुत सी फिल्में की, किसी एक बच्चे को चुनना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर आप बताएं तो किस पे? अच्छा, सेटिस्फैक्शन तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसी तरीके से नींद हराम करता हूँ सारी फिल्मों पे। लेकिन सच में सेटिस्फैक्शन जो हुआ था मुझे, वो मेरी फिल्म सत्या। वो क्या सेटिस्फैक्शन था कि हमें उस तरह का रोल का पहले तो सोचा ही नहीं था कि हमको जो है भाई के अलावा या किसी विलन के हेंचमैन के अलावा कोई दूसरा रोल मिलेगा। अचानक ये रोल मिल गया था और वो जो है इतना पसंद किया जा रहा था, तो मैं जा के वो फिल्म मैं अपनी फिल्म नहीं देखता हूँ नविका, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमेशा कुछ कमी है उसमें। लेकिन सत्या के शोइंग में जाता था, मैं हमेशा जाके खड़ा रहता था और मुझे लगता था यार मैं इतना बड़ा, अरे क्या बात है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। बिकॉज़ पहली फिल्म थी, पहली सक्सेसफुल वेंचर का मैं पार्ट था उसमें बड़ा। और बीकू महात्रे का जिस तरह से यूफोरिया हुआ था, जिस तरह से उस रोल को लोगों ने एक्सेप्ट किया था इंटरनेशनली, नेशनली, वो उससे मुझे ना बड़ी खुशी हो, अंदर से बड़ी खुशी होती थी। देन एज महेश भट्ट सेड टू मी दैट इट विल बिकम अ रूटीन फॉर यू, यू विल नेवर फील द सेम फीलिंग, you know. So yes, he was right. Now I look at it from a distance. लेकिन सत्या वगैरह जैसी फिल्में थी, या बैंडिट क्वीन, जहाँ पे पहली बार हमने अपने आप को पर्दे पे इतना इस रूप में देखा था, वो फीलिंग तो फिर कभी नहीं आ सकती। मनोज का कहना है कि पहले दो बच्चे बहुत फेवरेट होते हैं, बाकी सब मतलब ठीक है। फिर रूटीन हो जाते हैं, फिर पलटन हो जाती है। हर 9 महीने बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर पलटन हो जाती है। सो देन लेकिन इन आवर फैमिलीज केस, बाय द वे, हमारे जो सबसे छोटे जो भाई बहन है ना, वो सबसे दुलारे थे मेरे माँ बाप के। सबसे अब छोटा आपका बच्चा बंदा है। हाँ, ये तो बोलना पड़ेगा, प्रोड्यूसर साथ में बैठे हुए हैं तो बोलना तो पड़ेगा। लेकिन इसके बाद नसबंदी नहीं करवा रहा हूँ, नहीं, ये काफी था। लेकिन एक और आपका OTT सीरियल बहुत ज्यादा इंतजार जिसकी होती है, फैमिली मैन जी, उस पर कोई काम, कोई जी जी बिल्कुल काम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट अपने लास्ट लेग में है राइटिंग के। और मीनवाइल राजन डी के जो डायरेक्टर्स हैं, ये अपना कुछ कर रहे हैं, वो लोग अपना कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द जो है हम लोग स्क्रिप्ट मिलेगी, उस पर काम शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी लॉयर्स के पास जा चुके होंगे, पैसा ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, तो यार वो बहुत जरूरी था। हाँ,
बिल्कुल. So we can expect. Yeah, definitely next year. I think by the end of By the end of next this year. hopefully, fingers Yeah, crossed. I'm desperate to wear the costume of Sherkant Tiwari, We getting all back to waiting it. to get back on set. Yes. एक कोई डायलॉग बंदा का जो सबसे इंटेंस हो. मैंने सुना एक मोनोलॉग है जिसकी आपने 100 बार हाँ, प्रैक्टिस वो की. क्या है, क्लाइमेक्स का है. वो तो climax का है, हर लेकिन महादेव मैं कर सकते लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगा. उसमें दिनकर की जी की एक कविता है. वो 2 लाइन सुनाता हूँ आपको. सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है. सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण गहते हैं, संकट का चरण गहते हैं. अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग. क्या कह सकते हैं. थैंक यू. Manoj Bajpayee, you're a genius, Thank and I'm sure audiences are waiting for this one, and then the next one after this, and then the other next. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking, Manoj Bajpayee and Suparn. Totally a pleasure talking to both of you, and wish you the very best with this new venture. सिर्फ एक बंदा काफी है. Thank you. Thank you so much. Thank you Namaste. very much. Thank you, Navika.